So, अच्छा इधर वर्क कर रहा है, उधर नहीं कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा है, इस पे okay. Thank you so much. So, despite going for literature, I just tried to search out some literature regarding the facial pain blocks, but it's now still an emerging trend. Very limited literature and few case series are available there, so I just designed a small survey and share this link in different groups of anesthesia related people. And fortunately, I got 451 responses. And these responses are giving insight of facial pain blocks and their understanding in our anesthesia practicing community. The responses which we receive, almost 36.2% were trainees, they responded us. And then consultant working in teaching hospital, 44.7%, and working in non-teaching hospital, they are 19.1%. So the first question was, what awareness, what knowledge or what understanding they have about the facial pain blocks. Among them, 20.4% saying, heard about facial anesthesia, no. Ab suna hai humne. And 51% say, have knowledge about facial pain blocks, but not practicing. So this is a majority. And 28.6%, they are practicing the facial pain block in operation theatre according to our question. And the purpose for using these blocks, first one, the analgesic purpose, and 42.9% saying, no, they're the reverse, they're the both. 51% saying they are using it for analgesic purpose, and 40.2.9% saying they are using it for both purpose, that is analgesia and anesthesia. These things have to think about that, what sort of operation they are using facial pain blocks. And 6% purely they are saying they only use for anesthesia purpose. And then the next, how much effectiveness they've observed regarding the facial pain blocks when they use in their daily practice, that is a 97.9%. Then mostly everyone is satisfied according to this observation. And most frequently, blocks which our communities are practicing, almost whole of the list is hitting, and among them the pectoral plain block 1 and 2, 14% are saying they are using, and then serratus anterior plain block, 10% are they saying they are using the serratus anterior, and then erector spine is 22.4%, intercostal block 22%, and then the paravertebral 14, tab block, the majority. They are saying that majority are using tab block. Then quadratus lumborum and parasternal blocks. 8% saying they are also using this. I think they are belonging to cardiac anesthesia or cardiac specialty. So this is about some awareness and practice among our own community. ये सर्वे हमने अपने ग्रुप्स में शेयर किया था पाकिस्तान से रिलेटेड एनेस्थेटिक्स. तो why these are getting popularity? The reason for that. Pain तो हम पहले भी डील कर रहे थे, but I think there are two basic reasons. One is this debate which was started from the previous talk, that the opioid sparing. And these days I just observed it's a hot talk in our different WhatsApp groups. Even senior level people are involved in that talk, whether we should spare the opioids or we should continue with the opioids. तो मेजॉरिटी हम ये समझ रहे हैं कि ओपियाइड्स को अब हमें छोड़ देना चाहिए, उसकी बहुत सारी रीजंस है. तो जब छोड़ेंगे तो कौन हमारी हेल्प करेगा? द मोस्ट हेल्पफुल टूल इज देन go with these facial pain blocks.
और इसको ईजी कर दिया दीज इनोवेशंस एंड दीज टूल्स जो इस वक्त इतने हैंडी हैं कि यू जस्ट पुट इन योर पॉकेट, कनेक्ट विद योर मोबाइल डिवाइस, पुट ऑन पेशेंट एंड जस्ट स्टार्ट द block and there is no pain. So these are two basic reasons which I believe that is helping this trend to be emerging in anesthesia practice. Mechanism of action, very easy to understand, and most of us have believe on this, that this mechanism is actually working underpinning the effect of this facial plane blocks, and literature saying that is a lot of controversies regarding the mechanism of action, how these facial pain blocks works. But first one is neurovascular bundles always run in facial planes. This is the basics of anatomy. हम फर्स्ट ईयर MBBS से पढ़ रहे हैं. तो अगर वहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक को डाल दें, इंजेक्ट कर दें, तो इट्स अ वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग दैट विल ब्लॉक द नर्व्स देयर. दूसरी रीज़न दैट इज़ द इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया मैकेनिज्म. वी पुट द local anesthetic in intravenous system and that diffuse out and give us the anesthetic and analgesic effect. The same effect must having function regarding this facial plane blocks. So these are the two basic understanding regarding the facial plane blocks and their mechanism of action. Different blocks. इसकी अगर लिस्ट पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं मिलेगा जहाँ पे आप ये यूज़ नहीं कर सकते. फेशियल प्लेन ब्लॉक्स एंड देन द स्पेसिफिक ब्लॉक, उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि इफ़ यू हैव सम स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल नर्व, यू लेबल दैट ब्लॉक विद दैट स्पेसिफिक नर्व. फॉर एग्जांपल रेडियल नर्व, ऑल्दो रेडियल नर्व एंड मीडियल नर्व आल्सो रन बिटवीन द फेशियल प्लेन्स, लेकिन हम उनको फेशियल प्लेन की क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा हटा देते हैं इसलिए कि वो स्पेसिफिक नर्व है. फेशियल पेन ब्लॉक्स हम उसको कह रहे हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक नर्व नहीं है, नोसिसेप्टिव्स हैं या टर्मिनल ब्रांचेस रन कर रही हैं और उनको ब्लॉक कर रहे हैं. सो दिस इज द बेस अंडरनीथ कॉन्सेप्ट ऑफ फेशियल प्लेन. थोरेसिक रीजन में PEC 1 and PEC 2 for breast surgeries, any intervention on anterior of chest, and then serratus anterior block for lateral side of chest we can use for analgesia for ribs, and it has some deeper penetration as well. इसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ कार्डियक सेंटर में फॉर पेशेंट गोइंग फॉर मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी, जिसमें वो इंटरकॉस्टल रीजन में थोरेसिक जो है वो इंसिजन होता है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं. एंड आई जस्ट पुट द कैथेटर देयर और उसके लिए इन्फ्यूजन चला देते हैं एंड वी हैव वेरी कन्विंसिंग रिजल्ट. इसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम वो सून वो हम शेयर कर देंगे. तो उसमें हमने तो ये देखा है कि पोस्ट ऑप में हमें कोई एडिशनल एनाल्जेसिक नहीं देना पड़ता. अभी इंडक्शन में हमने उसको स्पेयर नहीं किया, इंडक्शन तो हम मॉर्फिन फेंटानिल के साथ ही लेके चल रहे हैं इंट्राऑपरेटिवली, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली हमें ज़रूरत नहीं पड़ी नलब्यूफेन की या इवन पैरासीटामोल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. तो इसका टॉपअप दे दें और इन्फ्यूजन चलती रहे, दैट्स ओके. दैन इंटरकॉस्टल ब्लॉक बहुत पुराना है, फेमिलियर है, पहले लैंडमार्क बेस लगाते थे, अल्ट्रासाउंड ने इसको और ईजी कर दिया. एंड देन द पैरावर्टिब्रल ब्लॉक एंड रेक्टर स्पाइनीज. रेक्टर स्पाइनी इज यूनिलैटरल एपिड्यूरल, इसने रिप्लेस कर दिया ऑलमोस्ट पैरावर्टिब्रल ब्लॉक्स को और इंटरकॉस्टल को, इट हैज स्प्रेड. और मैकेनिज्म वही है कि आप प्लेन्स में आ गए, देन द लोकल एनेस्थेटिक विल डिफ्यूज अप एंड डाउन. दिस वन इज़ ए न्यू मोडेलिटी एंड इस पर अभी कोई डाटा इतना कन्विंसिंग डाटा नहीं है कि आप स्टर्नल रीजन की पेन को या स्टर्नल इंसिजन को स्टर्नोटमी के लिए कोई ब्लॉक लगा सकते हैं. तो ये कार्डियक के वालों के लिए एक चैलेंज था. अब लिटरेचर इस पर कुछ केस सीरीज़ आ रही हैं, हम भी इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि बाईलेटरल करना पड़ता है, आप यूनिलैटरल नहीं कर सकते. तो बाईलेटरल कैथेटर डाल के उसमें दो अप्रोचेज हैं, एक इंटरकॉस्टल पेक्टोरो इंटरकॉस्टल प्लेन ब्लॉक एंड देन द ट्रांसवर्सस थोरेसिक मसल के ऊपर, इंटरकॉस्टल एंड ट्रांसवर्सस थोरेसिक मसल के बीच में जो प्लेन है उसको यूज़ करते हैं.
तो ट्रांसवर्सस थोरेसिक मसल के लिए थोड़ी सी और हमारी लिमिटेशन है व्हेन वी आर डीलिंग विद कैबेज, तो उसमें वो मेमोरी आर्टरी जब हार्वेस्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे फिर हमें वो प्लेन नहीं मिलती, फिर हमें ऊपर जो है वो पेक्टोरो इंटरकॉस्टल फेशियल प्लेन पे आना पड़ता है। इट हैज़ सम कन्विंसिंग टाइप ऑफ इफेक्ट्स एज वेल। इसमें हमने ये देखा है कि पोस्ट आप में जो एनाल्जेसिक रेस्क्यू एनाल्जेसिया है उसकी रिक्वायरमेंट कम करता है। देन द एब्डोमेन tab block and its variations, subcostal and classical lateral, posterior, and then the ilioinguinal and iliohypogastric, that's the modification of tab. So, thank you so much. Question are up. Thank you, Dr. Aamir. Our next